Now see this question. A merchant buys 1260 kg of corn, 1 by 4 of which he sell at a gain of 5% and 1 by 3 at a gain of 8% and the remainder at a gain of 12%. If he had sold the whole at a gain of 10%, he would have gained rupee 27.30 paisa more. Find the cost price per kg. Okay, look this question. So let the cost of 1260 kg is X rupees. Okay, this X rupee is the cost of 1260 kg corn. Okay, so total amount you invested X rupees for 1260 kg corn. 1 by 4 of which you sell at a gain of a 5%, right? He sell at a gain of a 5%. Is X rupees ka 1 by 4 you sell at a gain of 5%. And then next 1 by 3 of X at 8%. And the remainder is X minus X by 4 minus X by 3 at 12%. If he had sold the whole at a gain of 10%, if the whole amount X rupee is at a 10% gain, then there would have gained 27 rupee 30 paisa. तो ये जो गेन आपका हो रहा है इसका और X रुपी के 10% गेन का जो डिफरेंस है दिस इज गिवन 27 रुपी 30 पैसा. इज इट ओके? इसको ठीक से समझिए. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है. लेट X रुपी इज a टोटल कॉस्ट ऑफ 1260 kg कॉर्न. अब X रुपी आपने इन्वेस्ट किया तो मैंने इस अमाउंट का 1 by 4 लिया. ठीक है ना? 1 by 4 of the total amount X at 5%, 1 by 3 of the total amount is at 8%. The remaining X minus X by 4 and X by 3 you sold at a gain of 12%. So this way you are gaining. But condition is with a given condition, if you had sold the whole at a gain of 10%, इस पूरे अमाउंट को अगर 10% गेन पे बेच देते, इस तरह से अलग ब्रेकअप ना करते, तो कितना 27 रुपी 30 पैसा वुड जनरेट मोर. ये एक आपकी अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई. इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. सो ओके, सो लुक हियर, लेट्स सॉल्व इट. That is 27 point, remove this decimal and put here 100. And then ये 100, ये 100, ये 100, ये 100 इससे कैंसिल हो गए. Okay, and now see this 10x and inside this 5 by 4x, and here it is 8 by 3x, and here x minus x by 4 minus x by 3. So it is 3 minus 4, 7 by 12, and 12 minus 7, 5 by 12x into 12. So this 12 and 12 cancel is equal to 2730. And now it is simplifications. 10x ये minus और ये minus 5x, 5x हो गया, and inside 5 by 4x and 8 by 3x. Okay, so it is 3 5 is 15, 8 4 8 is 32, 32 or 15 47, 47 by 12, 47 by 12x. It is 2730. Finally 12 5 is 60, 60 minus 47 means 13 by 12x is equal to 2730. So now the x is 13, 2 is 26, 1 is 13, 0,
X is 12 into 210. 12 into 2110 rupees. This is total amount you invested for getting 1260 kg corn. Here you have to find the cost price per kg. So divide this by 1260 kg means 12 into 210 divided by 1260 kg corn. So this and this cancel. 21 6 and 6 2. So answer is 2 rupees per kg. This is your answer. Okay. But again, if you have this kind of question in your exam, then you can do it with another approach. Another approach is means you can reduce the amount of calculations, right? It is an algebraic equation. Here I solve this question with the help of algebraic equations. But see, in this scenario, when the 1 by 4, 1 by 3, okay, you can assume an amount which can be easily divisible, which is easily divisible by 1 by 4, 1 by 3. Look here. Suppose the total cost of 1260 kg is 1200 rupees. Let the cost is 1200 rupees. So look here, actually 1200 is why? Because I can do it, I can do this 1 by 4 easily, 1 by 3 of this very easy, correct? So this is a objective to take 1200 means 1 by 4, 1 by 3 का LCM you have denominator का 4 और 3 का मल्टीपल 12 है तो 12 का कोई एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लिया मैं. अब देखिए क्या हुआ 1 by 4 ऑफ 1200 क्या हुआ 300 रुपए और 300 रुपए का 5% कितना हुआ 15 है ना इट इज 15 रुपीज. देन 1 by 3 1200 का 1 by 3 क्या हुआ 400 और 400 का 8% क्या हुआ वेरी इजी 32 एंड 400 300 का बिजनेस हो चुका तो 700 ही हो गया 1200 माइनस 700 500 बचा 500 का कितना 12% ऑफ 500 इज 60 हो गया. तो इस ब्रेकअप से हम लोग जो गेन करेंगे 60 30 107 रुपीज इक्वल टू 60 30 90 90 10 107 rupees. Got it? And now, if he had sold the whole at a gain of 10%, तो 1200 का 10% कितना हुआ 120 रुपए. इसका 10% 120 रुपए. तो कितना ज्यादा हुआ एक्स्ट्रा है 120 माइनस 1 एक्स्ट्रा हो गया 13 रुपीज. गॉट इट? अब देखिए 13 रुपी एक्स्ट्रा है और यहां रियल सिनेरियो में 27 रुपी 30 पैसा एक्स्ट्रा है. तो मैंने कॉस्ट कितनी ली थी 1200. सारी कंडीशंस को फॉलो किया तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई 13 रुपीज. रियल सिनेरियो में कितनी थी 27 रुपीज 30 पैसा. तो टोटल कॉस्ट मैंने एक्स ली थी तो एक्स और 27 रुपी 30 पैसे का रेशियो वही होगा जो 1200 अपॉन 13 का होना चाहिए. तो बस एक्स आ गया आपका. एक्स इज व्हाट 1200 इंटू 27.30 अपॉन 30. आपको क्या निकालना है पर केजी की कॉस्ट निकालनी. तो इसको आप 1260 केजी से डिवाइड कर दीजिए. सो हियर 1 to this 27 rupee 30 paisa by 13 divided by 1260 kg. आपका आंसर आ जाएगा. इस डेसिमल को हटाइए 100 आ गया. this cancel it is 12 and this 0 and this 0 cancel. And here 13 2 ja 26 1 ja 21 6 ja
and 6 2. Answer is 2 rupees per kg. So whenever you have this kind of a questions, तो 1/4 of which 1/3 of it, आप ऐसा नंबर एज्यूम कर लीजिए जो इन जिनका 1/4 and 1/3 आसानी से किया जा सकता हो. Like here, I assume this 1200 rupees amount. 1200 rupees I assume the total cost of 1260 kg और फिर इसके अकॉर्डिंग ये मैंने वर्क किया. तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा. दिस वे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और अच्छा होगा. Now see the next question. So see this question number 38. 1 kg of tea and 3 kg of sugar cost 612 rupees. But if tea rose 50% and sugar 10%, they would cost rupees 774. Find the price per kg of tea and sugar. So initially, it is a very simple question of सिंपल इक्वेशन बेस्ड वन तो पहले इससे हम करते हैं, फिर इसके बाद कुछ आपको इसमें और बताएंगे कैलकुलेशन की एक और तरीका क्या हो सकता है. सो सपोज तो 1 kg टी की कॉस्ट टी है और 1 kg शुगर एस रुपीज का है. सो हियर इट इज 1 into टी प्लस 3 into एस is equal to 612 rupees. Now, if T rose 50%, so the new price is 150% of this. ये तो आप सब समझते ही है ना. And here, sugar is 10%. So 3, this is 110 by this. And now equal to 774. ठीक. These two equations, if you equate, then you can get the value of T and S. ये एक algebraic approach है. ठीक है. तो इसको आप सॉल्व कर लें. Like here T plus 3S is equal to 612 rupees. And this is 1.5 T. And here it is. This is 3.3. 1.1 into 3, 3.3. S is equal to 774. मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में 1.5 का और फिर इससे सबट्रैक्ट कर दें. ठीक है. तो इसमें 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1.5 into T, 1.5 into 3 जा 4.5 S and 612 into 1.5. ठीक है. और फिर इसको आप इस तरीके से माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा. 4.5 3.3, this is minus 1.2s, and here it is this 774 था. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. इसको हम लोग 3/2 ले लेते हैं और 2 से ये हो गया 306. इट मीन्स एक्चुअली इट इज इक्वल टू 918. 774 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा. और 8 minus 4 is 4, and 11 minus 7 is 4, and 8 minus 7 is 1. Okay. And now minus minus cancel. So S is 144 divided by 1.2. This is 10, 12, 12. S is 120 rupees. S is 120 rupees. If S is 120 rupees, then T means T plus 3 into 120 is equal to 612. This is 360. So T is 612 minus 360. 2 minus 0 is 0. And this 11 minus 6, 5. 5 minus 3, 2.
So tea is 250 rupees per kg. Got it? So now it is very simple. Means you have here two simple algebraic equations. इनको solve करके आप इसे question को कर सकते हैं. But see this one another approach of solving these two equations कैसे करेंगे उसको समझिए. इस पर्पज से इस क्वेश्चन को मैंने आपके इस असाइनमेंट्स में रखा है. ठीक है. तो लुक इट हियर. चीजों को ठीक से देखिएगा और पूरा फोकस करिएगा क्योंकि जरा सा भी आप डेविएट हुए तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा. राइट. तो फिर लुक हियर. ये 1 kg टी था उसी तरीके से 1 टी ले लेते हैं और ये 3s हो गया. ठीक है. द टोटल कॉस्ट वॉज 612 रुपीज. अब ये कितना इंक्रीज हो गया 50%. ये कितना इंक्रीज हो गया द टोटल अमाउंट इज increased by 10%. And now it total cost is 774. डिफरेंस कितने का आ गया 774 minus 612. 4 minus 2 2. 7 minus 1 is 6 and 7 minus 6. So 162 rupees का डिफरेंस आ गया. Okay. And now see. पी के प्राइस 50% इंक्रीज हुए थे. इसका 10% इंक्रीज हुआ. तो डिफरेंस कितना आ गया 162 रुपीज. सपोज दोनों का प्राइस 50% इंक्रीज हुआ है मीन्स टी कॉस्ट जो है वो भी 50% इंक्रीज हुई. शुगर भी 50% इंक्रीज हुआ है. तो अगर ये दोनों 50% इंक्रीज हुए तो इस अमाउंट का 50% इंक्रीज होना चाहिए. इसका 50% कितना हुआ 306. समझ गए. मैंने एज्यूम किया कि शुगर के प्राइस भी 50% इंक्रीज हुआ है. तो जब 50% ये इंक्रीज हो रहा है 50% ये इंक्रीज हो रहा है तो इस अमाउंट का 50% ही इंक्रीज होना चाहिए. एंड द 50% ऑफ 612 इज 306. राइट. हमारा जो ये डिफरेंस आ रहा है इस रियल डिफरेंस से कितना एक्स्ट्रा है. इससे ही एक्स्ट्रा है 306. यहाँ पर आया 306 एंड 162 मीन्स डिफरेंस हो गया 6 minus 2 4 and this is 30 minus 16 is 40. 114 रुपी का जो ये है एज पर माई एजम्पशन ये एक्स्ट्रा आ रहा है. अब ये फोकस करिए एक्स्ट्रा कहां पे है. इसका जो कुछ भी था उसको मैंने 50% ले लिया था. हाँ एक्चुअल में वो कितना 10%. इसका मतलब यहां पर मैंने 40% की एरर की है. वो 40% की एरर इसके टोटल इन्वेस्टमेंट की 144 के इक्वल होगी. तो बस 144 इज 40%. तो 100% क्या होगा ये आपकी पूरी 3 kg शुगर की टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई. दिस बेस्ट 4 3 12 4 6 3 कैश किया गया 120 रुपीज पर kg. गॉट इट. तो अब फिर से सुन लीजिए मैंने क्या करा था 50% दोनों को एज्यूम कर रखा था. तो ये जो दोनों का रियल डिफरेंस 162 है इस एजम्पशंस के बेसिस पे इसका 50% कितना है डिफरेंस कितने का आना चाहिए 306 का. बट मेरा जो डिफरेंस आ रहा है इट इज मोर देन रियल डिफरेंस. कितना एक्स्ट्रा है 144. ये 144 जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने यहाँ पर एरर कहाँ करी थी. इसको 10% को भी 50% ले लिया था. यानी 3s जो 3 kg शुगर का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 40% एक्स्ट्रा ले लिया. तो इसका मतलब ये अमाउंट इसके इन्वेस्टमेंट के 40% का है के बराबर है. तो 144 इज 40%. तो 100% क्या होगा 120. यू गॉट इट. इससे शुगर को आ गया. अब जब ये आ गया तो 3 इंटू एस मीन्स 120 इंटू 3 360. 1 kg टी का चाहिए तो 360 को आप 612 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो टी आ जाएगा 612 माइनस 360. दिस इज 600 माइनस 5 and this is इस सब्ट्रैक्ट में 200 11 6 5 252 रुपीज. ये टी की कॉस्ट आ गई.
ओके, और देखते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई। चलिए उल्टा करते हैं इसको, दोनों का 10% ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको आपने समझ लिया, एक बार ऐसा करते हैं, दोनों का 10, जैसे 50-50% ले लिया, तो अगर हम 10-10% ले लेते हैं, ठीक, समझिएगा इसको ठीक से। अगर हम 10% ले लेंगे, इसी में ही कर रहे हैं, इंक बदल दे रहे हैं, दोनों का 10%, अगर 10% कर देंगे तो फिर ये 10%, ये 10%, 612 का 10% कितना हुआ? 61 रुपीज 20 पैसे। रियल डिफरेंस कितना है? 162 का। तो ये तो मेरा बहुत कम आया, तो कितने की एरर हुई? 162 माइनस 61.20। दिस इज 1028,110, 100 रुपी 80 पैसे का एरर आ गया। अब ये एरर कहाँ हुई? ये एरर जो है, इतना जो ये माइनस आ रहा है, ये इतना कम आ रहा है डिफरेंस, ये मैंने एरर कहाँ करी थी? अच्छा खासा ये 50% था, इसको मैंने 10% यानी 40% कम था। इसका मतलब टी 1 kg टी का जो इन्वेस्टमेंट है, उसका 40% इतना है, तो 100% क्या होगा? तो बस 100.80, 40%, तो 80, तो 100% क्या होगा? राइट, हटाया इसको, ये 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, एंड नाउ 4, 25, 8, 252 रुपीज आ गया। दिस इज व्हाट इट इज द कॉस्ट ऑफ टी। व्हेन यू नो द कॉस्ट ऑफ टी, तो फिर सुगर की कॉस्ट 3s 612 माइनस 252 आप निकाल सकते हो। Here the objective is only to show you this way you can calculate all these things, right? इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आएगा तो आगे हेल्प करेगा, ठीक। A manufacturer marks his good in advance of 80% on cost price, but he allows 15 articles to the dozen and also 10% discount for cash. What rate of profit on his outlay does he obtain from a customer who pays cash? Okay. And manufacturer, here, a manufacturer marks his good 80% of the cost price. So look here. So it is cost, mark price, after discount, selling price. So the cost price, and then this is mark price, and this is selling price. Look here. Now see the language of this question. A manufacturer marks his goods in advance 80% of the cost price, but he allows 15 articles to the dozen. So suppose 1 dozen means 12 articles की cost कितनी है? 100। 80% above, so इसका 80% above mark price कितना हो गया? 100 plus 80, 180 mark price हो गया, and you are and offering discount is 10%. 10% discount means 180 का 10%, 80, 18, तो 180 minus 18 is 162, ठीक। सो 12 जो आर्टिकल थे, 12 आर्टिकल्स, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 100। इस पे आपने 80% अब किया, डिस्काउंट दिया 162 का, लेकिन अब क्या करा आपने? 12 की जगह 15 दे दिए। सो अगर 12 आर्टिकल की कॉस्ट 100 है, तो 15 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? 125 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन। 1 डजन आर्टिकल की कॉस्ट 100 थी, 80% आपने इसको प्राइस को हाइक करके लिख दिया था 180, इस 180 पे डिस्काउंट दे दिया था, बट एट द लास्ट मोमेंट 12 की जगह आपने कितने देती है? 12। तो 12 की अगर कॉस्ट 100 थी, तो 15 की क्या होगी? 125। तो अब आपकी कॉस्ट 125 की कॉस्ट थी, आपको रियलाइज कितना हुआ? 162, ठीक। तो बेनिफिट कितने का हो गया? 162 माइनस 125, और कॉस्ट 15 की 125, तो कॉस्ट की जगह 125 ही आप लेंगे into 100. This is your answer. So this is 37. 37, and this is 25 5 and it is 4 by 5.
It is 0.8. So 8 7 ja 56. 8 3 ja 24 plus 5 29. 29.6% का गेन होगा. दिस आंसर 29.6%. Always first pause the video, you attempt it first, then see the solution. See this question. A man bought a horse and carriage which he afterwards sold for rupees 7,800, gaining thereby 10% on the horse and 25% on the carriage. Had he sold them so as to gain 25% on the horse and 10% on the carriage, he would have realized rupees 7710. How much did he pay for each? Means here you have to find the cost of horse and the cost of carriage. Okay, so look here. Here it is given that in first case he sold horse and carriage in 7,800 rupees. And with this amount, he gained 10% on the horse and 25% profit on the carriage. Okay. Had he sold them so as to gain 25% of the horse and the 10% of the carriage, he would have realized rupees 7710. Suppose the cost of horse is H and the cost of carriage is C. So in first case, when he is gaining 10% on the horse, it means 100, 10% of the horse and 25% on the cost. So 125% on the carriage. This is equal to 7800. And in second scenario, the 25% on the horse means 100, 25% on the horse, and 10% on the carriage means 100, 10% of the carriage is equal to 7710. So these two equations you have, equate them and you can get the value of H and C. Okay. But see the calculations. अगर आप इसको ठीक से देख रहे हैं तो 110, 125, 125, 110 इसका सम 235 होगा. इट मींस इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो H plus C into 235%. And here it is 0. This is 1, 8, 7, 15, and 7, 7, 14 plus 1, 15 is okay. So simplify it. H plus C is 1,551 into 10, and this okay, divided by 235. Okay, 235, it is 5 4 ja 5 7 ja, and this is 200, and this is 1551 47 divided. It is 1,551 47 47 3 ja 3 7 ja 21 3 4 ja 12 and 2 144 514 514 and was it is 3. Okay, so this is 33 and this is 33 to just 6600. It is H plus C. Okay, and now just in a previous question I suggested you how you can do this calculation faster. Okay, देखिए इसको अप्लाई कर रहे हैं. Look here.
10% like H plus C is 6600, and the 10% on the horse and 25% of the carriage हम बेनिफिट लेके इसको 7800 में बेच रहे थे, है ना। डिफरेंस कितने का हो गया? 1200 का। 8 - 6, 1200 का ये डिफरेंस हो जाता है 66। अब सपोज horse on 10% profit and the carriage is also on 10% profit, correct? If it is, then 6600 का 10% कितना हुआ? 660। 660 का डिफरेंस आना चाहिए, बट है कितने का? 1200 का। तो मैंने एरर कितने की करी? हमारी जो एरर हो रही है वो 540 की हो रही है। अब ये 540 की एरर कहाँ है? ये 10% था, ये तो 25 था, इसको भी मैंने 10% ले लिया था। इस कैरेज का 15% कम है। तो दिस 540 इज ए 540 इज 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ कैरेज, यानी कैरेज की जो कॉस्ट है उसका 50% है, तो 100% क्या होगा? वेरी सिंपल। नाउ 3 5 जा, एंड दिस इज 180, इट इज 20, सो आपका कैरेज आ गया 3600 rupees. If the carriage is 3600, so horse निकलना है, horse plus carriage is 6600, so the horse is going to be 3600 को 6600 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, it is coming 3000 rupees. ओके, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाती है अगर आप ऐसी चीजें जानते हो। अदरवाइज इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इक्वेट करेंगे आप दोनों को, तो एच ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी। बट इफ यू हैव दिस अप्रोच इन योर माइंड, देन many times or sometimes you can be benefited, right? So anyhow, you have to save your time. You have to be quicker when you are attempting the real CAT question, correct? Because it is a matter of एक क्वेश्चन भी अगर राइट हो जाता है तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपके 3 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, आपका परसेंटेज यानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो डोंट सी दीज क्वेश्चंस जस्ट एज आपको किसमें कुछ लोगों को लग सकता है बड़ा इजी क्वेश्चन, बट डोंट फॉरगेट आई एम टेकिंग द कैट कंसेप्ट क्लासेस, एंड हियर द ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू गिव यू द conceptual clarity about not only the profit and loss, even sometimes about the calculation also. See, shortcut means only you are reducing the amount of calculation, you are not sacrificing the concept. Okay, इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और फिर आगे जो असाइनमेंट्स होंगे उनका जो लेवल होगा और इससे हायर होगा तो आप इनको अप्लाई करेंगे। अभी ये कंसेप्ट क्लास का पर्पज इतना ही है। So these are 40 questions of profit and loss. I think sufficient to revise the conceptual clarity of profit and loss and related to questions and all. Next वीडियो में आपको और अच्छे क्वेश्चंस के साथ करेंगे और PYQs भी कराएंगे आगे जाकर के। अभी आप इतना ही रिवाइज करिए, जल्दी से जल्दी आप सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक के, अलजेब्रा के रिवाइज कर लीजिए और फिर वर्क करिएगा।